Let's begin by getting you details of Bole Baba, the self-styled godman at whose event, at whose satsang, this stampede broke out. And here's the big information we've accessed here on India Today. Bole Baba had cases previously against him. There was a case filed against him in 2000. Why? Because he had fooled his followers, duped them into believing that he can perform miracles. There was a girl who had in fact cancer, who he had adopted, and his followers believed that he would cure her. Now, one day, in fact, this girl passed away, and once she died, her body was taken to a crematorium. His followers, however, gathered around that crematorium, adamant that their godman, Bole Baba, will come and ensure that this girl lives again. It took, in fact, several police teams at the spot to lathi charge the followers to ensure that they disperse, and a case to be filed for finally a crackdown to take place. Bole Baba was arrested in that particular case. A case was filed back in 2000, but unfortunately it was dropped due to lack of evidence. But this particular case gives you details of exactly how Bole Baba fooled his followers, made them believe that he could perform all these godlike miracles, and then duped them because he was exposed back in 2000. Arvind Ojha is joining us with more details on this. He's joining us live from Hathras with the latest updates. Arvind, अभी भी Bole Baba गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन ये 2000 केस के बारे में हमको और जानकारी दे दीजिए। अक्षिता, 2000 में आगरा में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी और उस एफआईआर के बाद जो भोले बाबा वो अरेस्ट हुआ था और उसके साथ 7 और लोग अरेस्ट हुए थे। एक बच्ची थी जिसको कैंसर था, उसकी मौत हो गई थी, और जो भोले बाबा के फॉलोअर थे, जब उसको जलाने के लिए जाया जा था अंतिम संस्कार के लिए, तब भोले बाबा के फॉलोअर्स ने का कहना था कि जो बाबा है वो उस बच्ची को जिंदा कर सकता है। उसके बाद अंतिम संस्कार नहीं होने देने के लिए वो अड़े थे उनके फॉलोअर, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और उसके बाद जो सेल्फ स्टाइल गॉडमैन है उसको अरेस्ट किया था, भोले बाबा को, और उनके साथ जो फॉलोअर थे उनको अरेस्ट किया गया था। हालांकि बाद में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये बरी हो गया था। लेकिन जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो अब दिल्ली पुलिस इस बाबा की माफ करिएगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो खंगाल रही है। जो भोले बाबा है वो खुद भी उत्तर प्रदेश पुलिस में पोस्टेड था एज अ हेड कांस्टेबल। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें वो पोस्टेड था इटावा में। उसके बाद उसने वीआरएस लिया। अब वीआरएस किस लिए लिया था भोले बाबा ने, क्या उस दौरान भी उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा था? उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा था काफी सालों से, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग उसके पैरों की धूल लेने के लिए वहां पर इतनी भीड़ हुई, जिसके बाद स्टैम्पेड हुआ। 121 लोगों की डेथ हुई है। अब जो सीएम योगी है उन्होंने बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की है। इसमें अभी तक कोई भी अक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुआ है। जो नेम्ड एफआईआर में देव मधुकर जो मेन अक्यूज्ड है, उसको भी अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई है। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये जो सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी सामने आ रही है। जो 2000 में एफआईआर दर्ज हुई थी वो डिटेल्स भी हमने एक्सेस की है। अक्षिता, Okay, Arvind, thanks very much for joining us with all of those details. Arvind, breaking down right now the hunt for Bole Baba and the serious allegations against him back in 2000, which tells you really how these so-called godmen actually operate by going ahead and duping their followers, making them believe that they can perform all kinds of miracles and then repeatedly get exposed. Now at this point, with the kind of tragedy that's played out at his satsang, you would expect that Bole Baba would be in the custody of the police. But nobody knows where this self-styled godman actually is. He claims to be a former IB employee, an Intelligence Bureau employee, and right now his whereabouts aren't known. Originally a resident of Patiali village of Kanshiram Nagar, Bole Baba has thousands of followers in western Uttar Pradesh, in Uttarakhand, in Haryana, in Rajasthan and Delhi. And they were followers from all of these places who gathered in Hathras yesterday, where the stampede broke out. It's known that Bole Baba continued to draw large crowds despite COVID restrictions. Even at that time, he held these huge satsangs. There will be questions asked about why action wasn't taken even then against this man. तो मैं इस समय पर मैनपुरी के बिछिया इलाके में जो आश्रम है साकार हरि का, वहां पर मैं मौजूद हूं। पहले आपको आश्रम के वो रास्ते से शुरुआत करते हैं।
ये रास्ता देखिए, पूरा एक नेशनल हाईवे जो अलीगढ़ की तरफ जाता है, उस हाईवे से महज 200 मीटर की दूरी पर ये बड़ा फार्म हाउस कहा जाए, आश्रम कहा जाए, कोठी कहा जाए, महल कहा जाए, वो तैयार किया गया है। और ये करीब 4 से 5 साल पहले ही यहाँ पर आश्रम आया है। और ये रास्ते पर हमने दिखाया कि रंगोली सजाई गई है, ये गोल्डन कलर का गेट है, उस पर सीधे लिखा हुआ है नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। ये इस तरीके से गेट है, गेट को पूरी तरीके से लॉक किया गया है। कल बाबा अलीगढ़ हाथरस में आयोजन के बाद 1:30 बजे जब खत्म हुआ तो 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है और 1.5 से 2 घंटे का सफर तय करने के बाद यहाँ आए। इस बात की तस्दीक यहाँ उनके स्वागत में जो फूल बनाए गए, जो फूलों से रंगोली सजाई गई, वो करती है। यानी कि कल बाबा यहाँ पर आए और उसके बाद निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। हालांकि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि बाबा अंदर नहीं है, लेकिन पुलिस के अधिकारी अंदर जा ही नहीं पाए। असलियत ये थी। तो अभी माना जा रहा है कि बाबा अंदर ही हैं और ये पूरा रास्ता इसी तरीके से सजाया गया है। Let's bring in Santosh Sharma on this broadcast. He's joining us live from Hathras and is tracking all the latest on the investigation. Santosh, at this point, there will be serious questions about where Bole Baba is, about whether there is an intentional go-slow in the investigation, whether the police really are doing everything they can to find the self-styled godman, because he's known to be extremely influential. FIR lodged in this whole incident at Hathras Stampede that was named on the organizer, the member of the organizing committee, and one person is named who is the head of the organizing committee. But the Baba, called the Godman, he is not named. That's the reason even CM Yogi Adityanath said that there will be a judicial inquiry and a 2-member committee has been formed. SIT will submit his report and no person will be left who found guilty or who found involved in this whole stampede case. But one important thing that in any legal document, whether it was the FIR, whether it was any investigation, till now, no investigation or in any document, Baba is involved or Baba came in black and white. We can say that Baba came in on paper that he was accused or he was involved in this whole incident. Whole incident was occurred due to the organizers' mismanagement. Organizers told that they have 80,000 capacity, 80,000 persons will come, but beyond their limitations, approx 2.5 lakh people gathered there, and they have no management, they have no arrangements, whether it was the exit plan, whether it was the ambulance, whether it was the fire brigade. That's the reason the whole stampede occurred and 121 persons lost their lives. Now the FIR has been lodged, investigation is going on, and two separate, one is SIT is formed under ADG Agra Zone Anupam Kulshrestha, who is heading this SIT, and one judicial inquiry is also been set up, who will be headed by the retired Justice of High Court, and one retired IPS will also be involved in this judicial inquiry committee. So we can say FIR investigation is going on. On other side, SIT will submit his report to the higher officials who about the negligence from the organizing committee and as well as from the local administration.